ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहला सवाल, हज़रत आयशा पर जब तोहमत लगी थी, एक बहुत बड़े गुनाह की तोहमत लगी, तो अल्लाह ताला ने उनकी बरात में कुरान शरीफ की 10 आयतें नाजिल की थीं। 10 आयतें। ये 10 आयतें कौन सी सूरह की शुरू के अंदर हैं? कौन से सूरत मुबारक की शुरू के अंदर हैं? अल्लाह सुब्हानहु व तआला, when Sayyidah Aisha radiyallahu anha was accused of a sin, a great sin, Allah subhanahu wa ta'ala exonerated Sayyidah Aisha radiyallahu ta'ala anha of that sin, and 10 verses were revealed from Allah subhanahu wa ta'ala in exoneration, in showing the innocence. Don't have a look, don't Google search this, please. Yes, please put your phones away. Which surah was it? The start of which surah? If you can't answer, I will give you the options as well. So can you pass the mic to Safwan? Yeah. Walaikum salam. Surah Nur. MashaAllah, MashaAllah, Subhanallah, MashaAllah. Yeah, you can receive your prize. Suratul Nur, Suratul Nur. Suratul Nur is that surah of the Quran in which Allah subhanahu wa ta'ala exonerated Sayyidah Aisha radiyallahu anha of a sin that some of the people accused Sayyidah Aisha radiyallahu anha of. Yes, Jazakallah khair. Okay, question number 2. सवाल नंबर 2, सहाबियात में से वो कौन सी सहाबिया हैं, यानी फीमेल कंपेनियन, जिनका लक़ब है ज़ातुन नताक़ैन? ज़ातुन नताक़ैन. From the female companions, which female companion has the title or is named ذاتun nataqain, the owner of the two belts? The owner of the two belts. Yeah, Brother Nasir. Asma radiallahu anha. Sayyidah Asma radiyallahu ta'ala anha. Very good, mashallah, mashallah, mashallah. Can you, obviously this won't be for another prize, but can you explain why? Yeah. During migration from the Prophet, peace be upon him, and the Caliph Hazrat Abu Bakr, may Allah Ta'ala be happy with them. Yeah. They were in the cave of Thor, and during whilst they were there, and they were trying to evade the Quraysh who were trying to kill them, she was coming back and forth from Mecca with supplies and food and so forth. And while she was doing that, she had to take cloth away from her clothes and tie it to her in so everything doesn't fall. MashaAllah, very good. यानी कि हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हिजरत के मौके पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु का जो खाना था, उन्होंने अपनी कमरबंद को 2 हिस्सों के अंदर किया. तो नताक़ का माना होता है कमरबंद. सो कमरबंद को जब फाड़ा 2 हिस्सों के अंदर हुआ, तो उसी से खाना बांधा गया. इसलिए ज़ातुन नताक़ैन हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को कहा जाता है. सो सैयदा अस्मा is the daughter of Sayyidina Abu Bakr radiyallahu anhu. Okay, third question. हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम कुरान शरीफ के अंदर कितनी मरतबा आया है? How many times has the name Muhammad sallallahu alaihi wasallam come in the Quran? Yes, go on. 4 times. Very good. MashaAllah. MashaAllah. Very good. What's your name? Very good. MashaAllah. तो 4 मरतबा कुरान शरीफ के अंदर 4 मरतबा लफ्ज़ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आया है. 4 मरतबा. MashaAllah. Question number 4. उलुल अज़्म अंबिया का नाम बताइए. Tell me the name of the arch messengers, arch prophets. Tell me the name. Ulul Azm Anbiya. Yes, go on. No, not Sayyidina Abu Bakr. Anyone else other than Brother Nasir? Anyone else? Ulul Azm Anbiya ka naam. The 5 main or the greatest of the prophets. Go on. You're missing one out. Instead of Sayyidina Adam, who is it? No. Anyone at the back? Go on. Go on. Yes, all right, at the back.
Can you pass the mic, please? Nuh. Sayyidina Nuh alayhi salam, good? No, okay, don't worry, that's fine. At the front, go on. All five, yes. Yeah. Isa alayhi salam, the Prophet sallallahu alayhi wasallam, Sayyidina Ibrahim alayhi salam, Sayyidina Musa alayhi salam. Very good, mashallah, mashallah. तो पांच, you can take your prize. पांच उल अज़्म अंबिया हैं जो सबसे अफजल हैं अंबिया किराम में से. हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. 5 ulul azm, meaning arch messengers, the greatest. Okay. सवाल नंबर 5. लफ्ज़ कुरान का लफ्ज़ी माना क्या है? What does the word Quran mean? Literally. What does it mean? The word Quran. Go on, yeah. Holy. Holy, no, not holy. What does the word Quran literally mean? Kalam Majid. So it is Kalam Majid, yes. But what does it mean literally, the word Quran? Anyone? क्या माना? लफ्ज़ कुरान का क्या माना है? लफ्ज़ी. उस लफ्ज़ का क्या माना है? So that is hidayah. The Quran is hidayah, but the meaning of the word. Yes, so it represents Allah ka kalam, but I'm talking about the word itself. Literally. Yes, go on. Yes, something that's red. Yes, I'll give you that answer. Go on. MashaAllah. Something that's red. Something that's red or something that is joined. Yes, Quran either comes from qara'a, meaning to read, or qarana, meaning to join, because all the ayat are joined together. तो इसके दो लफ्ज़ी माना है. एक तो ये कि जो चीज़ पढ़ी जाए, क्योंकि लफ्ज़ कुरान क़राअ से आया है. क़राअ का माना जो चीज़ पढ़ी जाए या पढ़ना, और या तो क़राना से आया है. क़राना का माना होता है मिलाना, क्योंकि इसकी आयतें और सूरतें मिली हुई हैं, इसीलिए कुरान कहा जाता है. अच्छा. Question number 6. Recite the verse from the Quran which proves Khatmun Nubuwwah, the finality of the prophethood sallallahu alaihi wasallam, or you can even translate it for me. Recite it in English. Yes, so that's the word, right? I'm talking about the full verse. आप कहना चाहेंगे पीछे? आप हाथ अपने उठाया था? नहीं, अच्छा ठीक है. And close, very close. Very close. Allahi wa khatamani. Very good, mashallah, mashallah, mashallah. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. ما شاء الله. Very good. Alhamdulillah. अच्छा, सवाल नंबर 7. पहले तौरात नाजिल की गई थी या ज़बूर? Was the Torah revealed first or was it the Zabur? Someone who's not answered yet. At the back, right at the back. The Zabur. Wrong, sorry. So there's only other option. I can't take that question now. Sorry. All right, next question. We have to cancel that, sorry. Hazrat Khadija ka Yawm Wisal kaun si tarikh par hai? What date did Sayyidah Khadija radiyallahu ta'ala anha pass away? What date and month? Yeah, go on. 3rd of Ramadan. No, not 3rd of Ramadan. Yes, go on. No. Next. The 10th of Ramadan. The 10th of Ramadan. Very good, mashallah. Very good. Mashallah. Mashallah. What's your name? Hudhayfa. Very good. MashaAllah. अच्छा, हज़रत खदीजा की नमाज़े जनाज़ा किसने पढ़ाई? Who led the Salatul Janaza of Sayyidah Khadija radiyallahu ta'ala anha? Who led Salatul Janaza of Sayyidah Khadija? Yep, go on. Prophet. The Prophet sallallahu alaihi wasallam. Nope. Yeah?
Very good, mashallah, nobody. Because Salatul Janazah wasn't made in part of Sharia at that time. Very good, mashallah. Alhamdulillah. उस वक्त नमाज जनाजा शरीयत में अभी नहीं आई थी, उसमें नमाज जनाजा ही नहीं हुई हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की। तो ये हुक्म आने से पहले क्योंकि उनका इंतकाल हुआ इसलिए, माशाअल्लाह, वेरी गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, डिड यू आंसर द क्वेश्चन? माशाअल्लाह। हज़रत आयशा का विसाल किस महीने की किस तारीख में हुआ? हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा passed away in which month, which date? At the back, go on. Not the 15th of Ramadan. Ji. 18th of Ramadan, not the 18th of Ramadan. At the back, Nu'man. Not the 13th of Ramadan. At the back. 20th Ramadan, no. What did he say? Very good, mashallah. 17th of Ramadan, very good. Mashallah. What's your name? Muhammad. Yeah, mashallah. Very good. Alhamdulillah. 17th of Ramadan. Alhamdulillah. अच्छा, अगला सवाल, वो कौन सी दो नमाजें हैं कि जिसके लिए आदमी को तयम्मुम करने की इजाज़त है अगर उसे खौफ हो कि उस नमाज की जमात छूट जाएगी? Which two prayers has there been given permission to a person that he can perform tayammum if he has the khawf, if he thinks he's going to miss the jama'ah of that certain two prayers? Which two prayers are they? Yeah, go on next to the person in the green top behind. Janaza, I need two. Eid and Janaza, very good, that's right. Eid and Janaza. Eid and Janaza, very good, you can take your, very good. ईद और नमाज जनाजा के लिए अगर किसी को खौफ हो कि नमाज छूट जाएगी जमात की, तो उसके लिए तयम्मुम, उसको ये खौफ है कि अगर वज़ू कर लेगा तो नमाज छूट जाएगी, तो उसे तयम्मुम करने की इजाज़त है. That's only for two prayers, that's Eid and Janaza Salah. Because ईद और जनाजा सलाह के लिए कोई बदला नहीं है, जैसे कि दूसरी नमाज़ों के लिए क़ज़ा होती है, इन दो नमाज़ों के लिए, और अगर जुमे के लिए भी जायज़ नहीं है क्योंकि जुमे का एक बदला है, वो आप ज़ोहर पढ़ेंगे. अच्छा, इसके बाद, sorry? No, because you can perform witr on your own. It's only in Ramadan when you perform in Jama'ah. Okay, question number 12. ये आसान सवाल है, I hope everyone knows this. इमाम आज़म अबू हनीफा रहमहुल्लाह ताला का मज़ार मुबारक किस शहर के अंदर है? Which city is Sayyidina Imam Abu Hanifa rahimahullah ta'ala buried in? Yes. Oh, so where? Baghdad Sharif. Very good. MashaAllah. MashaAllah. Baghdad Sharif. Very good. MashaAllah. Question number 13. रमज़ान के रोज़े किस सन हिजरी के अंदर फ़र्ज़ हुए? In which hijri, which date were the fast of Ramadan made obligatory? Which? Yeah, go on. No, not the 13th hijri. Someone, anyone? Yeah, go on, in the orange, yellow jacket. Sorry? 10th hijri. What did you say? 10th, did you say 10th? No, it's not the 10th. Is anyone? Is this one at the back? Yeah, go on at the back. 3rd hijri, nahi, 3rd hijri bhi nahi hai. Ji, yep. 1st hijri, no. Yes, at the back there. Yeah, self, yeah. What did he say? 2nd, very good, mashallah. 2nd hijri, very good. Mashallah. Very good. 2nd hijri. सन 2 हिजरी के अंदर रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ हुए. What's your name? Muhammad Zain. Very good. Okay. Question number 14. अंबिया किराम और सालिहीन के तबरुकात का इस्तेमाल करना कुरान की किसी आयत या सूरत या हदीस से पेश करें. Prove
the permissibility of using the relics of the Anbiya, the prophets, or the pious men of Allah subhanahu wa ta'ala from the Quran, or any hadith. Or tell me a story, anything. Yes, at the back. So very good, Surah Yusuf. Yes, very good. He was in my lectures, alhamdulillah, mashallah. So which particular part of Surah Yusuf? Very good, very good. Yeah, Hamid, do you want to pass the mic, please? Hamid bhai. So I think it was Hazrat Yusuf alayhi salam, his Ji. shirt, his brothers took it back to Hazrat Yaqub alayhi salam. MashaAllah. And I think it's to do with the eyes, regain his eyesight. MashaAllah, alhamdulillah, alhamdulillah. So, Hazrat Yusuf alayhi salam के वालिद साहब Hazrat Yaqub alayhi salam की आंखों की रोशनी चली गई थी, तो हज़रत यूसुफ alayhi salam जब बादशाह हुए थे, उन्होंने अपनी एक पहनी हुई एक कपड़े को भेजा हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को, तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने जब अपने चेहरे पर मला तो उनकी आँख की रोशनी वापस लौट आई. So this is and proves the permissibility of seeking tabarruk, meaning blessing from the relics of the Anbiya or the prophets, pious men of Allah. Right. Next question. वो लफ्ज़ बताएं जो ठीक कुरान का दरमियानी लफ्ज़ बनता है. What is, if you were to have a look at the Quran, which is the middle word of the Quran, right in the middle of the Quran. Okay, yes, there it is. وَلْيَتَلَطَّفْ. That's right, very good. وَلْيَتَلَطَّفْ. Now, because Salim Uncle has answered it, can someone tell me the meaning of وَلْيَتَلَطَّفْ so I can give the prize? Because Salim Uncle's brought the prizes. Meaning, वَلْيَتَلَطَّفْ का क्या माना है? जो हजरात तफसीर के अंदर बैठे थे. وَلْيَتَلَطَّفْ. Anyone know the meaning of وَلْيَتَلَطَّفْ? Okay, that's a difficult question. We'll skip that, no worries. Next question. हज़रत अबू सुफियान का हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या रिश्ता है? What relationship does Sayyidina Abu Sufyan radiyallahu anh have with the Prophet sallallahu alaihi wasallam? Go on at the back. Cousin. Not cousin. Yeah, go on. Yeah, which kind of relative? Which kind of relative? At the back. Father-in-law. MashaAllah. Very good. MashaAllah. Alhamdulillah. सईदा उम्म हबीबा रदियल्लाहु ताला अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा में से हैं और उम्मुल मोमिनीन हैं. ये हज़रत अबू सुफियान की बेटी हैं. माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह. अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन. हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हज़रत आयशा से निकाह किस शहर में हुआ? द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हिज निकाह with Sayyidah Aisha radiyallahu ta'ala anha took place in which city? Yes, the brother in the white topi. Yes. Makkah, very good. Alhamdulillah. Makkah. Very good. Okay. अगला सवाल. खुलफाए राशिदीन में से वो कौन से खलीफा हैं जिनकी खिलाफत की मुद्दत सबसे ज़्यादा रही? That caliph who reigned for longer than any other caliph. His khilafah was the longest. Yes, go on. Sayyidina Umar radiallahu anhu. No, it's not Sayyidina Umar. Yep, go on. Yes. Yes, yourself. Sayyidina Umar, no, it's not Sayyidina Umar radiallahu anhu. Nu'man, go on. Sayyidina Abu Bakr Siddiq, no. Piche bilkul. Amir Muawiyah, Allahu Akbar, nahi. There's only one left. Yeah, go on. Sayyidina Uthman, alhamdulillah, okay. Alhamdulillah. So Sayyidina Amir Muawiyah radiyallahu an, that wouldn't be classed as Khilafah Rashida. Khilafah Rashida ends at Sayyidina Imam Hassan radiyallahu an. Okay.
वो कौन से जलील क़द्र सहाबी हैं जिनके लिए सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि ए फ़ुला फ़ुला मेरे माँ बाप आप पर क़ुरबान हैं। यानी कि हम कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि सरकार हमारे माँ बाप आप पर क़ुरबान, मगर सरकार ने एक ऐसे जलील क़द्र सहाबी के लिए कहा कि ए फ़ुला मेरे माँ बाप आप पर क़ुरबान। सुभान अल्लाह। कौन से सहाबी हैं? No, let me repeat the question. The question being in English. The Prophet ﷺ said to a certain Sahabi, may my parents be sacrificed upon you, so and so. Who is that companion the Prophet ﷺ said this to? Yeah, go on. Nope. You're going to say the same thing. Yep. Yeah. Sayyidina Anas, nope. Ji, पीछे. Hazrat Bilal? नहीं, हज़रत बिलाल नहीं. हज़रत साद बिन मुआज़? नहीं, साद बिन मुआज़ नहीं. जी नहीं, हज़रत अबू बकर नहीं. जी हज़रत उमर भी नहीं. हज़रत अली नहीं. Yes, at the back. Sayyidina Zubair, no. Yep. No. He's from the Ashra Mubashara. He's from the 10 promised Jannah. Anyone else? Koi aur? Is there anyone else who knows the answer to this? Anyone else? Who's Muhammad Zaid. Who's Muhammad Zaid? No. Yeah, one. Anyone else? Okay, shall I give you a clue? The name starts with a sin. Chala, you shouted it out, I'll give you the answer. That's right. It's Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas radiyallahu anhu. Sayyidina Sa'ad, you were close, Mustafa. That's Sa'ad bin Mu'adh, Sa'ad bin Abi Waqqas. I think you have to stop Brother Nasir from taking the checklist. Right. Bismillah. हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद सबसे पहले कौन सी ज़ौजा का विसाल हुआ? After the passing away of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, which wife of the Prophet sallallahu alaihi wasallam passed away first? Which wife? Sayyida Aisha, no. The back, go on, right the back in the green topi. Sayyida Khadija passed away when the Prophet ﷺ was alive, so no. Anyone else? Yeah, brother. Zainab what? Please don't tell the answers, right? Come on, you got the answer correct by Zainab bint Jahash. Sayyidah Zainab bin Jahash radiyallahu ta'ala anha was the first one from the wives of the Prophet sallallahu alaihi wasallam to pass away after he sallallahu alaihi wasallam passed away. अच्छा, इसके बाद ज़मीन का वो कौन सा हिस्सा है जो काबे से भी अफजल है बल्कि अर्श व कुर्सी से भी अफजल है? ज़मीन का वो कौन सा हिस्सा है जो काबे से भी अफजल है, अर्श व कुर्सी से भी अफजल है? What part and section of this world is even more greater or has more superiority even than the Kaaba, even than the Arsh of Allah and the Kursi of Allah? Yes, at the front. Yes, burial place of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Very good. The scholars have written that the virtue of the burial place and the soil which is touching the blessed body of the Prophet sallallahu alaihi wasallam is even greater than the Kaaba, even greater than the Arsh and the Kursi of Allah. Okay. Question number 22. जन्नत के 8 दरवाजे हैं, 8 दरवाजे हैं. वो कौन सा दरवाज़ा है जिसमें सिर्फ रोज़दार दाखिल होंगे? क़यामत के दिन सिर्फ रोज़दार दाखिल होंगे. Have you understood the question? MashaAllah. Rayyan, yes, very good. Rayyan. MashaAllah. Okay. Next question.
इमाम अबू हनीफा किस सन हिजरी के अंदर उनका इंतकाल हुआ? इमाम अबू हनीफा का किस सन हिजरी के अंदर इंतकाल हुआ? In which Islamic year, in terms of hijri, did Sayyidina Imam Abu Hanifa rahimahullah ta'ala pass away in? Which hijri? Which hijri? Pass away in? Go on. 7 hijri. Nope, not 7 hijri. He wasn't even born at 7 hijri. Yes? No. Not 13th hijri. Anyone? Yes, go on. 52. Nope. Okay, it's more than 100. Go on now, guess. Okay, it's from 100 to 150. Yeah, go on. 140, no. Go on. No. Yes? Yep. 133, no. At the back, nope. 7, sorry? No, in between 100 and 150. Yeah, go on. No. Go on. No. Go on. No. Okay, I'll have to shorten it even more. 125 to 150. Yes. 140, no, 149. Yes, there. Yep. No, next. Who said 150? MashaAllah, very good, 150. MashaAllah, Alhamdulillah. 150. 150 सन हिजरी के अंदर हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला का इंतकाल हुआ. Okay, next question. मुसलमानों का पहला क़िबला क्या है और कितनी मुद्दत तक इस क़िबले की तरफ नमाज पढ़ी गई? So there's 2 answers in this. What's the first qibla of the Muslims, and for how long did the Prophet ﷺ and the Sahaba perform salah towards this qibla? Go on. Masjid Al-Aqsa, and how many, what's the duration? 7 years. Masjid Al-Aqsa to hai, wo magar kitna? 17 months. Very good, mashallah. Alhamdulillah. 16 to 17 months. Very good. Mashallah. 16-17 महीने तक मस्जिद अक्सा की तरफ नमाज पढ़ी गई. उसके बाद जब हुक्म आया तो मक्का शरीफ की तरफ. वैसे अभी जो मामलात चल रहे हैं मस्जिद अक्सा के अंदर, आप लोग खूब दुआ कर रहे हैं अपनी भाई बहनों के लिए कि अल्लाह ताला उनकी जान माल इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत फरमाए और जो ज़ालिमीन उनके जुल्म से उनको नजात अता फरमाए. नेक्स्ट क्वेश्चन. अच्छा, वो कौन सी नमाज है जिसमें इमाम आहिस्ता क़िरात करता है मगर उससे पहले वाली जो नमाज है उसमें बुलंद, और उसके बाद में आने वाली भी उसके अंदर भी बुलंद क़िरात करता है? What's that salah where the imam in that salah recites quietly, but before that salah he recites loudly, and the one after he recites loudly, yes, and the one after as well he recites loudly. Yeah, at the back, go on. Yes, did you put your hand up? Did you put your hand up? At the back? No, did you not put your hand up? Okay, anyone? Yes? Asr. So, Asr like normal Asr, which Asr? Normal Asr. No, yep. No, the question is, tell me that salah itself, the imam recites quietly, but the salah before, he recites loudly, and the salah afterwards, he recites loudly as well. Asr on a Friday, that's right. So Asr on a Friday, the salah before it, he recites loudly. And Asr on a Friday, Maghrib salah, he recites loudly as well. Alhamdulillah, mashallah. यानी कि जुमे के दिन असर की नमाज. हज़रत उमर की साहबजादी का नाम बताइए जो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निकाह में आई. Tell me the name of the daughter of Sayyidina Umar radiyallahu anha who married the Prophet sallallahu alaihi wasallam.
who married the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Yes. No, not Sayyidah Aisha radiallahu anha. She's the daughter of Sayyidina Abu Bakr. Just 1 second before. If someone else, then I can give. Yep. No, Sayyidah Fatima is the daughter of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Yep. Sayyidah Hafsa radiallahu ta'ala anha. Very good, mashallah. Alhamdulillah. Hazrat Hafsa, जो Hazrat Umar radiallahu ta'ala anha की साहिबजादी है. नेक्स्ट क्वेश्चन. ऐसी कौन सी नमाज पढ़ने की सूरत है कि जहां हर रकात के अंदर जो शख्स पढ़ रहा है उसे तशहुद पढ़ना पड़ेगा? Tell me the situation in where a person performing salah will have to sit down for tashahud in every single rak'ah. पीछे हाँ मतलब मगरिब कैसी सूरत बयान कीजिए. क्या सॉरी कितनी रकात मिस की है? 1. यस वेरी गुड अल्हम्दुलिल्लाह. यस माशाअल्लाह. अरे 2 लोग ये जी अच्छा. Acha. Next question might be a bit difficult, but try to answer the question. Name the Ashra Mubashara. Tell me the names of Ashra Mubashara. Ashra Mubashara के नाम बताएं. जो 10 मुबारक हस्तियों के नाम जिनको अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की बशारत दुनिया के अंदर दी. Ashra Mubashara के नाम. The 10 promised Jannah. Anyone? At the back, right at the back. Yes? Very good. No, you can't Google the answer. Sorry. You're gone. No. Right. Anyone else? Anyone else know the 10 promised Jannah? No? At the back? Hafiz Sahab at the back, do you know? चलिए बताइए. चारों खुलफा जी साद इब्न अबी वक्कास, जी। हजरत तलहा, जी हजरत जुबैर जी और हजरत सईद बिन जैद जी. और हजरत अब्दुल रहमान बिन औफ. हज़रत अब्दुल रहमान बिन औफ. सही. हो गया ना? नहीं बाकी है अभी. किल्लत है. साद इब्न वक्कास किसी और को पता है बताइए. Does anyone else know? Anyone else? Do you know the answer? Yes, go on. Hazrat Talha, Hazrat Zubair, Hazrat Ubaidah bin Jarrah, Hazrat Sa'ad bin Waqqas, Hazrat Sa'id bin Zaid, and Hazrat Abdul Rahman bin Auf. MashaAllah, alhamdulillah, very good. MashaAllah, MashaAllah, alhamdulillah, alhamdulillah. MashaAllah. Okay, आखिरी सवाल है. बारकल्लाह फीकुम, जज़ाकल्लाह. नहीं. This is not for me. नहीं. Jazakallah khairan. Okay, this is the final question, and then we're going to move on to like a tajweed kind of competition, inshallah. Next, this is the final question. Final question, we'll end with an easy question. सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल किस सन हिजरी के अंदर हुआ? The Prophet सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम passed away in which hijri? Which hijri? पीछे हाजी साहब.
Nay. 23, nay. Yes. Nope. Yep. Nope. Yes. Yeah, is that one? Nahi. Not 13th. Yes, in the middle. 10. Not 10. 14th, nay. 632, that's English date. The Hijri. At the back. Yeah, one. 10. No, not 10. Right at the back. At the green topi? No, not 12. No. Koi aur? Anyone else? Not 9. Who said 11? Yes, mashallah, it's 11. MashaAllah. Alhamdulillah. MashaAllah. Right, we have a few left. So, them two will leave for the tajweed thing. Yeah. And how many of these? These are three, they're similar. And then that one? These are good ones. This is a good one. Okay. So we have 3 more questions left. Okay. Yeah. We'll leave that 3 for the tajweed then. Last 3 questions. The Quran was revealed over how many years? Very simple. No, don't shout at the answers, please. Yeah, go on. Okay. In the middle, less. 23 years, mashallah. Alhamdulillah. Yes. 23 years. Okay. Next question. Sayyidina Ali radiyallahu an karramallahu wajhahu al-kareem married off his daughter to one of the Khulafa al-Rashidin. Which one? Which Khalifa? Hazrat Ali radiyallahu ta'ala ने अपनी साहिबजादी को खुलफाए अरबा में से किसी खलीफा को अपनी निकाह अपनी साहिबजादी को दिया उनकी निकाह में. वो कौन से खलीफा हैं? Yes? Sayyidina Umar radiyallahu anh. Very good. Alhamdulillah. MashaAllah. MashaAllah. Okay, final question now. Final question. A hadith consists of 2 things. 2 things. Yeah, I've not asked the question yet. 1 second. One is a matan, one is a sanad. From these 2, the matan and the sanad, which one has the chain of narration? Yeah, go on. It's the sanad, mashallah. Alhamdulillah. Okay. Very good. Right, next, the 3 coming, which are larger than the boxes that you've been given now, is the tajweed competition. So, in front of me, yes, you can use that mic. You're going to recite a surah other than Surah Al-Fatiha and other than the 4 quls, meaning other than قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ and قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ. You need to recite Quran in front of me, and I will test your Quran, and then the best person who recites the Quran, you will receive a prize, inshallah. So, if you keep your hand up if you want to recite. Come forward, you can come forward. Yes, what adults wala bhi baad mein hoga. This is for children only, this one. So this question, if you want to recite Quran, come to the front. Yeah, come to the front. Stand there. Stand there. So, let me take my phone out. What your name is? Muhammad Zaid. Yes, sir. If you pass the Quran to, pass the mic to. Shall I start praying? Yeah, you can start reciting. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. MashaAllah, MashaAllah. Next, your name? Muhammad? Yes. Okay. بسم الله الرحمن الرحيم والأسر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. MashaAllah, MashaAllah. Alhamdulillah. Your name? Always, okay. Go on. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض ما ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض لا يؤول حفظهما وهو العلي العظيم. MashaAllah, MashaAllah. Alhamdulillah. Your name? Muzammil, yeah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانهر إن شانئك هو الأبتر. MashaAllah, MashaAllah. Barakallah. Yeah. Next. Your name? Muhammad Tayyib Zain. Yeah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. Barakallah. Jazakumullah khair. Jazakumullah. Very good. Next. Your name? Zaid Patel. Okay. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. MashaAllah, MashaAllah. Very good. Name? أمان نصر. Aman. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. MashaAllah, MashaAllah. Next person. Your name? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. MashaAllah, MashaAllah. Alhamdulillah. Next person. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر
فصل لربك وانهر إن شانئك هو الأبتر. MashaAllah, your name? Hudayfa, MashaAllah, very good. Yeah, next person. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر وسواس الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة يوسوس الناس. MashaAllah, MashaAllah, your name? MashaAllah. Name, please? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. MashaAllah, MashaAllah, MashaAllah. Alhamdulillah, your name? Muhammad. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تدليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. MashaAllah, MashaAllah, Jazakumullah khair, Barakallah. Very good, Alhamdulillah. So obviously it's quite difficult just to make a decision on the spot, but Alhamdulillah they all read very, very good. But Hudayfa in particular read very, very good. So Hudayfa, you can come forward. MashaAllah, MashaAllah. Alhamdulillah. अब जो है बड़े हजरात का टर्न है, तो आ जाएं, सब खड़े हो जाएं यहाँ नमाज पढ़ने के लिए. आइए, एक एक करके आइए, अगर पढ़िए आप या माइक ही ले जाइए उनके पास. कोई भी सूरत आप पढ़ें. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. MashaAllah, MashaAllah. Alhamdulillah. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. पढ़ने में ना शर्माइए, पढ़िए बस. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام فيها طامت الليل الفجر. MashaAllah, MashaAllah.
जी लीजिए लीजिए हनीफ भाई पढ़िए, आइए हनीफ भाई को दीजिए। नहीं, हाँ फिरोज भाई पढ़िए जी। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. माशाअल्लाह माशाअल्लाह, पीछे वो पढ़ना चाहेंगे। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. माशाअल्लाह صدق الله العظيم. माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। Anyone else going to recite? चलिए आप भी पढ़ लीजिए। नहीं, ठीक है, माशाअल्लाह बहुत अच्छा पढ़ा आप लोगों ने। उसमें से बिलखुसूस तजवीद की रियायत बहुत ज़रूरी है, और जिन लोगों की तजवीद नहीं सही है और नहीं पढ़ पाते सही से, तो पहली बात तो कोशिश करनी चाहिए कि सही हो जाए। अगर कोशिश करने के बाद भी नहीं सही हो तो उस पर, जब बंदा कोशिश करता है और अदा नहीं होता है तो उस पर सवाब है, इस पर गुनाह नहीं है। गुनाह तब है जब बंदे ने कोशिश भी नहीं की याद करने की और सीखने की, उस वक्त गुनाह होगा। You saw throughout the month of Ramadan you had tajweed classes, and inshallah I believe the tajweed classes will continue after the month of Ramadan as well. तो इसमें आप खूब इसमें हिस्सा लें ताकि कुरान शरीफ सही हो और नमाज के अंदर लुत्फ़ आए। नमाज के अंदर लुत्फ़ क्यों नहीं आता है, हमें क्यों कंसंट्रेशन फोकस क्यों नहीं होता है नमाज के अंदर? क्योंकि हम पढ़ते रहते हैं ऐसे ही जो जहन में आए। तो पहली बात तो उसे अदायगी सही हो, अल्फाज सही हो। तो माशाअल्लाह, at the back our brother माशाअल्लाह recited in a very very nice voice. Alhamdulillah, if he improves just a bit, I think we have our own qari in our masjid. Alhamdulillah. What's the brother's name? MashaAllah, Alhamdulillah. ठीक इंशाअल्लाह, अल्लाह ताला हम सबको बरकत अता फ़रमाए, इल्म व अमल के अंदर बरकत अता फ़रमाए, रिज़्क़ के अंदर बरकत अता फ़रमाए। इस माह मुबारक के सदक़े हम सब की बख्शिश व मग़फ़िरत फ़रमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अरे नहीं, अरे नहीं।
किसी को दे देंगे इंशाल्लाह